अस्सलाम वालेकुम। आज बनने लगी है फ्रूट चाट। ये फ्रूट आ गए हैं, ये सेब और ये वो है किन्नू है, और ये केले और अंगूर और अमरूद, और साथ बनेंगे दही भल्ले और पकोड़े। ये आलू बॉईल किए हुए हैं दही दही भल्लों के लिए, और ये पकौड़ियाँ भी कोई हुई हैं। तो मैं अब ये ना मैं वो काटती हूँ अब सारा फ्रूट। ये इसमें मैं डालती जाऊँगी। ये जो सारा फ्रूट है ये सारा नहीं बनेगा, जितनी आज फ्रूट चाट हमने बनानी है ना वो बनेगी, तो बाकी जो है ना वो फिर वैसे खाया जाएगा या फिर बाद में चाट बनेगी। छुरी से सही करते हैं ना, फिर मैं उससे ही काटती हूँ। वो मेरे हाथ जो है ना उनसे ना इस तरह ऐसी चीज़ जो है ना पकड़ के काटनी बड़ी मुश्किल है, हाथ दर्द करते हैं ना, हड्डियों में मसला है ना, तो इसलिए ऐसे पकड़ के ना ये काटना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैं इस पे स्लेट पे चीज़ें काटती हूँ। लेकिन ये अब छीलना तो इसी तरह ही है ना, छिलका जो है ना, बस ये मैं एप्पल और फिर इसके बाद में ना एप्पल काटनी है, छीलनी है। अब अमरूद काटेंगे। ये कट गए सारे सेब, अमरूद और बनाना और अंगूर।
जाएंगे अमरूद। इसमें से मैं ये बीज निकालूं। मशीन चल रही है तो मशीन की भी आवाज़ थी थोड़ी सी, कपड़े धुल रहे थे। इनका ना टाइम नहीं, मैं ऐसे साबुत ही डाल दूँ, टाइम नहीं है अब ना काट के डालूँ, ऐसे ही डाल देते हैं। अब मैंने पकोड़े भी बनाने हैं, दही बल्ले भी बनाने हैं आज, फ्रेश सब कुछ। अब इसमें जाएगी चीनी, जाएगी चीनी। चाट मसाला, कीनू जाएंगे, कीनू इसमें भी कर सकते। लेमन जूस नहीं, ऑरेंज जूस।
सा ना ये काला नमक भी जाएगा। एक गया पिंक सॉल्ट। ये बन गई फ्रूट चाट। और अनार नहीं मैंने डाला क्योंकि अनार फिर वो खट्टा होता है तो वो फिर दांतों में फिर आता है। तो ये फ्रूट चाट तैयार है। तो अब ना इसको रखते हैं टेबल पे और बाकी काम करते हैं। तो ओके, अल्लाह हाफिज़। आज की इतनी ही वीडियो थी। ये बने लगे हैं समोसे।